No. Transaction विषय में चलता हमरो previous class रे. In this session will be learn to implement transaction and the manage code. What is it? Deadlock, right? Deadlock con. Deadlock is a situation where each transaction waits for a lock on each other object to be released, right? Deadlock situation कौन? Deadlock रो meaning कौन? Suppose तुमको माने तमे authority मागिलो, right? धर तमरो जेमती तमे रेस्टोरेंट जाउछ, ठीक अछि? रेस्टोरेंट रे तमे गोटे टाइम रे किछिटा ऑर्डर तमे देलो, हला धर मोर राइस दरकार, दाल दरकार, ऑर्डर दे साला परे तमे जस्ट तम पाखु ऑर्डर आसला तापर पुणी तमे ऑर्डर देलो तमरो मसाला कोल्ड ड्रिंक्स या फिर मसाला पापड़ पय ऑर्डर देलो तो जेते जाय तमरो प्रीवियस ऑर्डर टा प्रोसेसिंग चलछि सेते जाय तमरो नेक्स्ट ऑर्डर टा तमरो क्यू रे अछि हला प्रीवियस ऑर्डर टा तमरो प्रोसेसिंग हेई साला परे तार आउटपुट टा बाहर साला परे देन नेक्स्ट ऑर्डर टा को से तार प्रोसेसिंग टा करियो दैट इज कॉल्ड द डेडलॉक राइट transaction 1 right transaction 1 the locked system अछि transaction 2 lock system अछि right then तमे जदि transaction 2 टाको फोन थरे ऑर्डर तमे दोछ तो ऑब्वियसली तम से कोन करबो डेडलॉक सिचुएशन आसीबो माने transaction 2 टा r1 को जिबो री transaction 1 टा मोर r2 को पळे आसीबो जदि तमे क्रॉस डेडलॉक करछो ताले डेडलॉक हे जाय कारण transaction 1 तार प्रायोरिटी के r1 transaction 2 रो प्रायोरिटी टा के r2 एबे ट्रांजैक्शन 2 टा r1 जेतरा एक्सेस करियो निश्चय डेडलॉक हबो कारण क्रॉस कनेक्शन आसी गेला जेंदे मोबाइल तमरो टेलीफोन रे राइट या फिर मोबाइल फोन रे तम गोटे मोबाइल डायल करूछो सेरा आउ जणो को लागि जाय छी तो सेरा कोन डेडलॉक सिचुएशन हला You can resolve deadlock by setting deadlock priority, customizing lock timeout, detecting deadlock, use sys.dm underscore executing underscore request, avoiding deadlock using update lock, right? एटा को तमे यूज करिया पड़िबो जेतले तमे deadlock situation यूज करूछो हला sys.dm underscore execution underscore request. Setting deadlock priority, deadlock priority. The deadlock priority option control how a particular session reacts in a deadlock. Syntax is set deadlock priority low, normal, or deadlock variable. Right. Customizing lock timeout. The set lock timeout statement can be used to set the maximum time that a statement waits on a block resource. Syntax is set lock timeout period, right? जब तुम गूगल ले हो किंबा जे कोन से तमरो वेबसाइट हो रे प्रोसेसिंग होचे घुरुचे लास्ट को तुम देखा जब बेसी समय नहीं गला ता लास्ट को तुम देखा तो सेशन टाइम आउट हला जेमति तमरो तुम विशेष कर तमरो यूज हुए कोठी एटीएम जो डिपॉजिट मशीन रे राइट तुम जरे अकाउंट नंबर टा टाइप करो धरो तुम एटीएम कार्ड आनो अकाउंट नंबर टाइप करिया पड़ो किछि माने से अकाउंट नंबर टाइप करिया पे गोटे टाइम फ्रेम अछि राइट से टाइम भीतर जदि अकाउंट नंबर टाइप कर देलो ताले प्रोसेसिंग टा चलेबो धरो तुम स्लो टाइम टाइप करूछो तो ऑटोमेटिक से कोन करियो सेशन टाइम आउट अगेन लॉगिन अगेन बोले कहिबो राइट सेटा होछि तमरो लॉक्ड टाइम आउट detecting deadlock SQL server ends a deadlock by automatically selecting the deadlock victim. The sys.dm underscore execution dot request returns information about each transaction that is executing within a SQL server can be used to detect the transaction that is causing the deadlock. For example, select asterisk form say ये तो pass करो right. Avoiding deadlock by using update lock. SQL Server allows only one transaction to obtain an update lock on the resource at a time. The update lock is converted to an exclusive lock if a transaction modified a resource. Otherwise, the lock is converted to a share mode lock. Which of the following concurrency problem is known as a dirty read? Uncommitted dependency, right?
अनकमिटेड डिपेंडेंसी माने जोटा कमिट हेनी सेटा तमे रीड करे पे जाउ तो सेटा होचे मोर अनकमिटेड डिपेंडेंसी एंड सेटा को जे डायरेक्टली रीड which of the following lock enable other to view the data when modified by the current transaction share lock right current transaction taku tame share kariya pen jaउ that is called the share lock which of the following lock prevent your database from deadlock intent lock update lock and share lock update lock prevent karibo right what is managed code any .NET supported language that runs in the common language runtime is called a managed code right आजिका डेट रे तमरो पोस्ट कोड टाकू तम जदी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम हिसाब रे तम जदी माने ताकू रन करेबो ताकू जे मैनेज कोड राइट एंड मैनेजमेंट स्टूडियो स्पेशल मैनेजमेंट स्टूडियो स्टिल तमरो बहुत जगह रे तमरो यूज होचे फॉर एग्जांपल जेमिति मो बड़ भाई तार डाटाबेस ता एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो रे मैनेज होची राइट तो से यूएसए बेस्ड कंपनी बट तार स्टिल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो तार होची कारण ता .NET फ्रेमवर्क सपोर्टेड तार सॉफ्टवेयर तो .NEट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर सपोर्टेड सॉफ्टवेयर भितरे तमर जेते सब लैंग्वेज तम सब यूज हुए ता डाटाबेस ता तमर मैनेजमेंट स्टूडियो रे तम को मैनेज करबा को पड़िबो एंड से जो मैनेज करिवो जो तमर क्वेरी थ्रू रू ताकवा जे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम सीएलआर ताकवा जे let us see how to manage code are executed in CLR VB code Visual Basic Code compiler manage code IL right intermediate language right C# code compile tar compiler IL manage code then C++ code compiler IL manage code तीनटा को मोर आसीबो कोठी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम रे कारण तमे VB रे प्लेटफॉर्म रे तमे तैयारी करो C# प्लेटफॉर्म रे तैयारी करो या फिर C++ प्लेटफॉर्म रे तैयारी करो समस्त अलग अलग कंपाइलर अच्छी से कंपाइलर कहा को पॉइंटिंग करिवो कॉमन लैंग्वेज रन सीएलआर को पॉइंटिंग करिवो सीएलआर कोन करिवो रन टाइम एग्जीक्यूटेबल कोड रन टाइम रे ताको एग्जीक्यूट करिवो देन तमरो ऑपरेटिंग सिस्टम को से रिटर्न करिवो कोन तारा आउटपुट आसे क्लियर दिस इज क्लियर एसक्यूएल रे मैनेजमेंट स्टूडियो रे एसक्यूएल रो मैनेजमेंट स्टूडियो रे तमे त मैनेजमेंट करूछो डाटा को मैनेज करूछो आ माने कोन तुम डाटा जे कोनसी गोटे प्लेटफॉर्म रो तमर आसी सेटा हुए तो तमर VB प्लेटफॉर्म रो आसी पारे या फिर C# प्लेटफॉर्म रो आसी पारे या फिर C++ प्लेटफॉर्म रो आसी पारे समस्त अलग अलग कंपाइलर अछि राइट से कंपाइलर कोन करबो इंटर लैंग्वेज हिसाब रे ताको मैनेज करबो एंड मैनेज करी काहा को दबो सीएलआर को दबो सीएलआर कोन करबो रन टाइम रे ताको एग्जीक्यूट करबो एग्जीक्यूट कला पर कोन करबो इन द ऑपरेटिंग सिस्टम को ताको तारा आउटपुट से पठाई क्लियर CLR integration allows the database developer to write the code in any of the .NET supported language, allows to run managed code within a database, provides the following benefits that is better programming model, common development environment, ability to define data types. एवढा होची CLR integration. CLR integration in SQL Server can be represented as shown in the following figure, that is SQL Engineer. ता भितर तमर CLR अछि तमर CLR प्लेटफॉर्म अछि देन होस्टिंग लेयर अछि देन तमर SQL OS ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर तो जेता तमर कोड जेता आसीबो सेटा CLR रे तमर रन टाइम रे एग्जीक्यूट हबो होस्टिंग आकार रे एग्जीक्यूट होस्टिंग लेयर रे एग्जीक्यूट हबो होस्टिंग लेयर कोन करबो SQL सर्वर को दबो SQL सर्वर कोन करबो ताकू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को दबो Let us discuss the need for the managed code in SQL Server. You should use TSQL statement when you need to perform the data access and manipulation operation that can be done using TSQL statement. Implement programming logic that can be easily implemented using TSQL programming constructs.
You should use manage database object when you need to implement complicated programming logic, access external resource such as calling a web server or accessing the file system, implement a CPU intensive functionality, right? SQL server रे आमे कोड टाकू काई मैनेज करछे एटा केवल एथि पई जे हमकु आहुरी यूजर फ्रेंडली करिया पे हमकु कोड टाकू मैनेज करा जाय। फास्ट आपन वॉइस एंड देन टिके नेटवर्क प्रॉब्लम बोधे तमर थिबो। मो पटे नेटवर्क परफेक्ट अछि, तमर बोधे नेटवर्क प्रॉब्लम टिके थिबो बोले से पई डिले आछि, राइट? क्लास कर दियो तापर जेतले वीडियोटा देखियो क्लियर आसथु, वीडियोटा जेतले अपलोड करिवि सेतले क्लियर आसथु, सेतले जा वीडियोटा देखियो जा डाउट हो मत पछरिबो, क्लियर? तो ए जो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो जो तमरो जो रे तमे जो सीएलआर रन टाइम रे तमे जो करूचो मैनेज कोड जो करूचो, मैनेज कोड रे कोन होउची जे हमको सीपीयू रो इंटेंसिव सीपीयू रो फंक्शनलिटी हिसाब रे हमको मैनेज करिया को पड़े, कारण को जेता हम डाटा जेता आसे अनसर्टेनिटी हिसाब रे आसे ताकू मैनेज करी कि मते सीपीयू प्रोसेस आकार जदी हमको प्रोसेसिंग करिवार अछि ताकू सिंपलीफाई करिवार ताकू मैनेज करिवार अछि कोड टाकू मैनेज करिवार अछि ता पई मते कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लॉजिक टाकू सिंपलीफाई करिवार अछि, राइट? वेब सर्वर वेब सर्विस एंड एक्सेसिंग द फाइल सिस्टम को मते इजीली एक्सेस करिवार अछि, देन सीपीयू मोर तार एक्टिव होबो, देन सीपीयू मोर प्रोसेसिंग से करे हला। जे कोनोसी जिंस देखि दियो तमे जदी कोनोसी भी तम रियल लाइफ रे नै जाओ जे कोनोसी भी तम इंफॉर्मेशन हो किंबा डाटा हो ताकू जदी मते मैनेज मु जदी ठीक से न करबी सेटा मोर फंक्शनलिटी ठीक से होबो नाही, सेमती एसक्यूएल रे, राइट? क्वेरिंग रे तो जदी मते कोनोसी डाटा टाकू जदी माने मु जदी प्रॉपर्ली मैनेज न करबी ताक से डाटाटा मोर अनसर्टेनिटी हिसाब रे सेटा ट्रीट कर, क्लियर? Which of the following option is supported by .NET and not by TSQL? Writing queries, creating procedure, object orientation, writing trigger, object orientation. SQL query रे तमरो object orientation आसेनी, object orientation तमरो आसे कोठी C++, C#, Java एगुडा सब रे तमरो object oriented approach तमरो आसे, राइट? SQL ले मोर query write कर परिबी, प्रोसीजर क्रिएट कर परिबे एंड ट्रिगर क्रिएट कर परिबे, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाही। So in this session we will be learn to implement manage database object. Create manage database object, you need to perform the following step: create manage code in any of the .NET programming language, right? Compile the code to create an assembly, import and configure the assemblies in the database engine, create a database object based on the imported assembly, right? तो तमरो जेता तमरो कोनोसी तम डाटाबेस क्रिएट करिवार अछि ताले तम डाटाबेस टाकू सदाळे तमरो मैनेजिंग हिसाब रे तम डाटाबेस टा क्रिएट करे अछि, माने रिलेटेड हिसाब डाटाबेस टा क्रिएट करे अछि। तो डाटाबेस टा क्रिएट कले ही मु डाटा गुडा को प्रॉपर्ली मु स्टोर करि परिबी मोर सर्वर भीतर, राइट? जेंती तमे गोटे एप्लिकेशन तयारी कलो, गोटे प्रोजेक्ट तयारी कलो, सेटा VB रे हो, C# रे हो, C++ रे हो, सेटा प्रोजेक्ट का तमर .NET फ्रेमवर्क बेस रे तमर हबा दरकार। देन बिल्ड करिवो कोठी असेंबली, CLR इंटीग्रेशन, DLL, राइट? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देन सेटा तमर SQL डाटा डेफिनेशन रे तमर आसीबो हला, SQL data definition, then create assembly, create function, create procedure, create trigger, then create type. तो एटा मोर जो प्रोजेक्ट मो तयारी कली तार डाटाबेस टा मोर एई सब जिंस मोर एक्टिविटी होबो डाटाबेस ऊपर, देन से डाटाटा मोर कोड रहइबो मोर SQL सर्वर रहइबो, देन SQL सर्वर रो मु को कोठी जिबी सेई SQL सर्वर टा को मु एग्जीक्यूट करबी मोर पैटर्न अनुसार, मोर डाटा अनुसार मु ताको एग्जीक्यूट मोर रिक्वायरमेंट अनुसार मु ताको एग्जीक्यूट करी, बट डाटाटा मोर सर्वर रे थिबा दरकार। केमिति रहइबो
प्रोजेक्टटा मोर तयारी हबो प्रोजेक्ट तयारी हला परे सीएलआर रे ताको रन करबी देन सीएलआर रो थ्रू रो मु ताको मोर मो अनुसार ताको क्वेरी सब देबी मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टेटमेंट हो मोर फंक्शन क्रिएशन हो मो रिकमेंड अनुसार सपोज तुमको कुआ गला जे गोटे टेबल अछि एम्प्लॉय टेबल वगैरह सैलरी फाइल सब अछि मु कहली सैलरी रो सम भाग तो तुम क्वेरीटा दबो ना तो क्वेरीटा मोर कोठी आसीबो एठी आसीबो फंक्शन वाला से क्वेरीटा तुम स्टोर करियो कोठी सर्वर रे स्टोर करियो देन जे तमरा यूजुअली जे एक्सेस करिवो से क्वेरीटा को एक्सिक्यूट करिके तमरा एक्सेस करिवो हला बुझला assemblies can be a .dll or .exe file that can contain compile manage code can be imported using the create assembly statement syntax is create assembly name form then tara body ta rahila permission underscore set parameter can accept any of the following values that is safe external access and unsafe safe ta kona does not allow the assembly to access any external resource right तमे जो assembly तैयारी करतो सेटा external party की access न करिया पय तमर safe mode रे ताकू रखा जाय external access माने तमे allow करिवो तम छडा आउ किए ताकू access करिया पय then unsafe allow access to any resource within or outside SQL server right then the team viewer रे टीम व्यूअर रे तमे जेतले मु धर तम सरे टीम व्यूअर रे कनेक्ट करी तमे जे मते तमरो यूजर आईडी एंड पासवर्ड न दबो मु तुमको एक्सेस कर परिबि नाही सेरा होची तमरो तमरो एक्सटर्नल एक्सेस तमे अलाउ करू धर मु तमरो जेंते वाईफाई धर तमे वाईफाई जेतले ऑन करबो सेतले तमर नियरेस्ट जेते सब वाईफाई सब ऑन थो सब तमरो शो कर सेटा होची अनसेफ राइट जार जदी पासवर्ड जदी तमे सी जदी सेट न करथो तले जे पहले से तको यूज करे तार वाईफाई को यूज कर पारे फॉर एग्जांपल क्रिएट असेंबली क्रेडिट कार्ड वैलिडेटर फॉर्म तार पाथ रा देला विथ परमिशन सेट सेफ राइट create an assembly named credit card validator form the credit card validation.dll assembly file with the permission set safe can you update an assembly by using the alter assembly statement for example alter assembly credit validator with permission set equal to external access change the permission set of the assembly to external access तमे गोटे मोड रे तमे जते सेव करूछो ताको चेंज करिया पे अल्टर स्टेटमेंट भी तमे यूज कर पारे you can delete assembly an assembly by using the drop assembly statement एठी डिलीट करिया पहले ड्रॉप करिया पड़े तो मोड टाको ड्रॉप करिया पड़े हला असेंबली टाको ड्रॉप करिया पड़े which of the following permission will you use to call unmanaged code unsafe what is managed database object a managed database object refer to an import assembly by default SQL Server does not allow the running of the managed code on the server the enable CLR you need to use the following statement that is store procedure underscore configuration CLR underscore enabled 1 right at least one time pai tomaro configuration ta tomaro CLR ta enabled ho after executing the preceding statement you need to run the following statement that is reconfigure right तमो एई स्टेटमेंट ता तमे एक्सिक्यूट कला पर तमको एईटा को पुनते रिकॉन्फिगर स्टेटमेंट को तमको एक्सिक्यूट करबार अछि ताले सी कोन करिवो रिकॉन्फिगर कर दो हला जेंति तमरो सॉफ्टवेयर रे एबे जदी कोनोसी सॉफ्टवेयर को तम अनइंस्टॉल करिया पेन जिवो सेठी ऊपर देखेबो कंट्रोल पैनल देखेथो रिपेयर माने कोन रिकॉन्फिगर करू पुन थरे रीइंस्टॉल करू अनइंस्टॉल न करे कि ताको पुन थरे रीइंस्टॉल करू हला while developing managed database object you will have to use the following namespace that is system.sql system.data.sql client एटा कोठी जेता तम फ्रंट एंड आउ बैक एंड को तम जेता कनेक्ट करिवो सेताले एई नेमस्पेस तमु दरकार फ्रंट एंड रे तमर जेता कोडिंग रे सी शार्प हो VB हो किबा तमर C++ हो सेतेबेले तमे एई कोड ता तमे दबो राइट system.data.sql client system.data.sql types
microsoft.sql server ए नेमस्पेस यूज कले ही तमे कनेक्शन करि परिबो नले तमे कनेक्शन पई तमु से अलाउ करिवो The following table describe the classes found in the sql.data.sql client namespace, that is class sql context represent the context under which the assembly is running. SQL pipe allow you to send result or manage directly to the client application. SQL trigger context allow you to access information about the event that fired the trigger during a managed trigger operation. SQL connection allow you to contain a database before querying any data. SQL command allow you to send TSQL command to the database server. SQL data reader allow you to work with the result of a query. एवढा सब तुमको मन रखा पड़ो जेताले को तमरो database थ्रू रु तमे जेताले तमे कंटेंट रे जेताले टेबल इंफॉर्मेशन वगैरह तमे database स्टोर करबो एगुडा सब तमे यूज करबा को पड़िबो देन आउरी भी देला तमरो CLR SQL सर्वर इंटीग्रेशन एटा तुमको मु स्लाइड रे देबी एटा खाली खाली माने किछि नै खाली रीडिंग मारिया कथा जानिबा कथा कोन कोन एटा विशेष कुछ यूज नै The following table lists various attributes provided by the Microsoft.sql server namespace. Attribute SQL procedure allowed to create, right? Attribute and allowed to create more SQL procedure, manage store procedure, SQL function, manage user defined function, SQL trigger, manage trigger, SQL user defined types, that is managed user defined data type. तो एगुडा सब तुमको यूज करिया को पड़िबो at the time of तमरो कनेक्शन जेताले तमे करिवो database को एंड तमरो प्रोजेक्ट सह कंटेंट सह जेता कनेक्शन करिवो तमे सेताले एट्रिब्यूट जेताले यूज करिवो तार मीनिंग होची एगुडा SQL प्रोसीजर जेताले एट्रिब्यूट यूज करिवो ता मीनिंग होची मैनेज स्टोर प्रोसीजर SQL फंक्शन जेताले यूज करिवो सेताले ता मीनिंग होची मैनेज यूजर डिफाइंड फंक्शन SQL trigger जेताले यूज करियो मैनेज ट्रिगर SQL user defined data type जेताले यूज करियो इट मींस कोन मैनेज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को मैनेज करिया पे तुमको एही एट्रिब्यूट ता यूज करियो को पड़े You can create the following types of managed database object, that is store procedure, function, trigger and user defined data types. Let us create managed store procedure. Syntax to creating managed store procedure is create procedure name as external name assembly identifier, then dot type name dot method name, right? So procedure तमे front end तैयारी करो तुमको एमते create procedure name, then as external तमरो table name, then assembly identifier, then तमरो type जहाँ दबार अछि name जहाँ दबार अछि. Step to create manage store procedure एटा होची step by step manual हला कोड रे नुह कोड रे अलग कोड रे तमे क्रिएट प्रोसीजर नेम कहि कि तमे बनेबो बट मैनुअली तमे केंति स्टेप बाय स्टेप केंति कर बिना कोडिंग के step to create manage store procedure, that is create a .NET class that implement the functionality of the store procedure, register the assembly in SQL server, create a store procedure that refer to the actual method of the assembly. Creating a .NET classes namespace CLR store procedure केमती .NET class तमे create करियो देखो namespace CLR store procedure public class XML product then तार product ना right. Marks the code will be used as a managed store procedure. Defines the function that provide the functionality of the managed procedure. Let us see how to create an assembly using the .NET framework. Register the assembly. Create assembly name form path then external assembly. Create an assembly that can access the external resource. Creating managed store procedure. Create procedure name, then XML data, then data type, then external name, then तमरो CLR procedure तमे pass करो. हेले से रन टाइम रे ताको एक्सिक्यूट करबो XML पाथ थ्रू ताको एक्सिक्यूट करो.
Create manage procedure named CLR product by using the convert XML assembly. Executing the manage store procedure, declare at P XML set P select product ID वगैरह वगैरह रहिला. Then तमरा for XML auto, then element root catalog executes तमरा procedure तमरा ना तापर तार path रहला. Create a file named catalog.xml and write the data from the product table in XML format in the file. Last session टा रहिला हला ए session टा हमें Monday start करू हला ए session टा हमें Monday start करू database same database object टा Monday start करिवा तो Monday मोरो इटा सरी जिवो तमे Tuesday कि Wednesday आसो देवाशीष सेंटर को आसो हला Monday SQL टा मोरो सरी जिवो तमे Tuesday कि Wednesday प्लान करके तमे आसो सेंटर को आसो मु तुमको XML रो आउ यार प्रैक्टिकल देखे देबी एंड तुमको पेन ड्राइव टा भी धर के आसो मु तुमको पेन ड्राइव पे से जो जेते सब इंस्ट्रक्शन उडा सब मु देई दे बुझला हला तापर हमें PLS को स्टार्ट करू हला आउ दशहरा छुट्टी रे हमर क्लास हबो खाली दशहरा दिन आउ अष्टमी दिन छुट्टी रहिबो बाकी सब छुट्टी रे हम का सेंटर क्लोज होची 24 रु 27 जाए सेंटर हमर क्लोज होची 24 27 जाए बट मु ऑनलाइन रे क्लास नेबी हला खाली अष्टमी दशहरा अष्टमी आउ दशहरा दिन क्लास हबनी बट ऑनलाइन रे मु तमर क्लास नेबी ठीक अछि ओके मंगलवार की बुधवार सोमवार दिन मु एटा सारीबी ट्यूसडे की वेडनेसडे प्लान करो आसीबा पय हला ओके थैंक यू